Okay, kids, welcome back. So, today we will start with chapter number 3 of grade 7th math, which is HCF and LCM. Okay, so we have already done multiplication and division of integers. Now it's time to start with HCF and LCM. So, when we start the chapter, there are some basic terms that they want us to know. For example, what is a prime number, what is a co-prime number, what is twin prime, and etc. Okay, so let's start. So my first question to you is, what is a prime number? You have already learned in your grade 5th and grade 6th. So I assume you know what is a prime number. Take good 5 seconds and then we will come back. Okay, coming back. If you were able to recall that a number which has only two factors, a number which has only two factors is called a prime number, then you were correct. Okay. So I told once, prime numbers are those numbers which have only two friends. उसके सिर्फ दो दोस्त होते हैं. ठीक है, कौन से दो दोस्त होते हैं? वो नंबर खुद, that is own number, और I should write number itself. Okay, इसके सिर्फ दो दोस्त होते हैं, number itself, मतलब वो नंबर खुद और one. For example, if I take the number 7, okay, when we find number of the day, how do you find the factor? You write 1 into 7, then you continue, you will find 7 into 1. So what are the two factors that you find? 1 and 7, you are correct. So 7 is a prime number because it has two friends or just two factors. क्या दो factor है? एक तो 1 and एक वो number खुद, that is number itself, that is 7. Okay, so prime number is a number that has just two factors, that is 1 and the number itself, मतलब वो number खुद. You can think of other prime numbers like 3, 5, 11, 17, etc. Okay, because all these numbers will have only two factors, that is the number itself and 1. Okay, is 1 a prime number? Okay, take 2 seconds to think, then we will come back. Okay, coming back. Some people might say, Bhaiya, 1 is a prime number. Some might say no, but think of a reason. Okay, for a number to be a prime number, it should have two factors. But if we see 1, it has only one factor, that is 1, right? 1 into 1, 1. So 1 is not a prime number. Okay, always remember, 1 is not a prime number because it has only one factor. And for a number to be a prime number, it needs to have two factors, that is 1 and the number itself. So it is not prime. Okay. Can you recall the smallest prime number? Can you think about it? And I will give you an hint. It is an even number. It is only a prime number that is even. Okay, otherwise no even number is a prime number, right? So think the smallest prime number and that too which is even. Yes, you thought it right. The answer is 2 because 2 can be written as 1 into 2 or 2 into 1. So it has two factors, that is 1 and 2, which is the number itself, right? But if you see other even numbers after this, for example 4, 6, 8, 10, all these are composite numbers. Okay, by composite you mean you have more than two factors. Okay, more than two factors, मतलब 1 तो होगा, number itself भी होगा, उसके अलावा और factors होंगे. For example, 4 can be written as 1 into 4, 2 into 2, 4 into 1. So the factors are 1, 2 and 4. तो 1 तो factor है, 4 भी है, but एक और है 2, इसलिए ये composite number है because it has more than two factors. Okay, so now I will give you like 20 seconds. Take a pause, take note of everything, and then we will come back. Okay, write anything that you find is important for you. Okay, coming back, I will clear the screen. Now I have question for you to do. Okay, you do. The question is, you have to find the prime numbers between, find prime numbers between 1 to 50 and then count how many numbers are there which are prime. Okay, so find
prime numbers between 1 to 50 and tell how many are there. Okay. So what will you do? You will find all possible prime numbers between 1 to 50. You will write in this line, make a line in your notebook, write the numbers and then count how many are there. Okay. So that is your task. Take 10 seconds to note this down, then I will clear the screen. Okay, coming back, I will clear. Now, the second thing is, I will ask you is, what do you mean by coprime numbers? Have you ever heard of the term coprime? And you can't say no, because I remember you have studied it in grade 5. Okay, I have taught math to grade 5 and I've taught them coprime numbers, so you already know. Okay, for example, I take set of two numbers, okay, 3 and 5, or say 7 and 9, okay. What similarity do you see in these pairs? Okay, what do you see? If you see 3 and 5 together, if you see 7 and 9 together, what do you notice? Take good 5 seconds, then we will come back. Okay. Okay. So 3 and 5 have just one common factor between them, which is 1. Similarly, 7 and 9 have just one common factor between them, that is 1. मतलब 1 ही ऐसा नंबर है जो 3 और 5 को डिवाइड करता है. 7 और 9 में भी 1 ही ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है. सो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ टू नंबर्स फॉर विच द कॉमन फैक्टर इज 1. मतलब जो भी दो नंबर मैं लिख रहा हूं उनके लिए अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो वो दोनों नंबर कोप्राइम कहलाते हैं. इफ आई टेक 4 एंड 12, they are not coprime because they have 4 as common factor. 1 तो है ही, बट 4 भी दोनों को डिवाइड करता है. 4 into 1 4 होता है, 4 into 3 12 होता है, 4 times 3 is 12. So for both the number 4 is a common factor, so it is not coprime. This is not coprime. But if I take 11 and 12, these are coprime because for both of them only 1 divides them. There is no other common factor. Okay, so coprime numbers are those numbers, for coprime, those numbers for which common factor is 1. Okay, 1 is going to only divide them. Those numbers for which common factor is 1. Okay, take good 30 seconds to note it down, then we will come back. Okay, coming back, I will clear the screen. So I want you to write some examples of coprime. Some examples of coprime. Okay. So we have 3 and 8, 4 and 9, 21 and 22, 23 and 24, and you can write two other pairs. Okay, think of example, think of two numbers for which common factor is just 1 and then write here. Okay, you can do it. It can be your, you do. It's very easy now. Okay. Now, the next part is twin prime numbers. Twin prime numbers. This is a new term for you all, I guess. So let's see twin prime numbers. Okay. Okay. I am giving you some examples. Okay. What do you notice? Take good 5 seconds, then we will come back. Okay. Okay, coming back. What did you notice? So if you see, all the pairs that I've given have 1 as their common factor. ये जो सब पेयर है इनका कॉमन फैक्टर 1 है. 3 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है, 5 और 7 का भी 1 है, 11 और 13 का भी 1 है, 29 और 31 का भी 1 है. तो यू विल आस्क भैया हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कोप्राइम? कोप्राइम में भी तो कॉमन फैक्टर 1 होता था. सो यू आर राइट, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है. जैसा कोप्राइम में होता था वैसी ट्विन प्राइम के लिए भी है.
जो दो नंबर्स है उनका बस एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। बट डिफरेंस क्या है, ट्विन प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो भी दो नंबर है जैसे 3 और 5 उनके बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। 11 और 13 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। सिमिलरली 29 एंड 31 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ट्विन प्राइम में क्या होता है, जो भी दो नंबर्स है उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है और जो वो दो नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। मतलब 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 11 2, 31 माइनस 29 2। Okay, I have one task of you do. You will find two other pairs, okay, of twin prime numbers. ठीक है, एक पेयर और दूसरा पेयर, find it. Okay, I will give you 10 seconds to pause, take note of things, and then I will clear the screen. Okay, coming back, I will clear the screen. Okay, now some questions for you do. First question, find a number, नंबर का शॉर्ट फॉर्म है NO और डॉट। फाइंड अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब जो प्राइम भी नहीं है और जो कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट में क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, बताया था, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, एंड प्राइम में क्या होता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, ठीक है। यहाँ लिखो मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ कोप्राइम। आपको बताना है कौन सा कोप्राइम है, ठीक है, और आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम, मतलब दो नंबर का सेट, उनका कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो कोप्राइम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम, ए 8 और 14, बी 4 and 5, C 17, 19 and D 27, 15। What will you do? हर एक पेयर के लिए जैसे 8, 14 है, आप चेक करोगे, अगर दोनों के बीच बस कॉमन फैक्टर 1 है तो वो कोप्राइम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे आप A B C D सबके लिए चेक करोगे, ठीक है। राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम numbers from 1 to 50, from 1 to 50, मतलब 1 से 50 के बीच आपको 5 पेयर लिखना है ट्विन प्राइम्स के। ट्विन प्राइम बताया था दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो और उनके बीच का डिफरेंस 2, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट वन फॉर यू, दैट इज 23, 24, दे आर ट्विन प्राइम क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 ही इनको डिवाइड करता है। सॉरी, ये ट्विन प्राइम नहीं है, 23 एंड 25, ओके। कॉमन फैक्टर 1 है एंड दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 25 माइनस 23 2, ओके। जो मैं पहले लिख रहा था 23, 24 वो कोप्राइम है। कोप्राइम क्यों है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। जब कॉमन फैक्टर 1 हो और डिफरेंस 2 हो तब वो ट्विन प्राइम होता है, ठीक है। सो टेक नोट ऑफ इट, टेक पॉज एंड राइट द क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व, ओके। टेक केयर।